Hello everyone, this is Dixit and I welcome you all to this TopprLive session where we will be decoding CBSE class 10th maths board paper. So as you guys all know and as you guys might have given the exam as well, so the class 10th maths board paper held today and the question paper, if you remember our previous session of discussing the tips, the pattern was more or less similar. So CBSE has already announced the section, the number of marks it will be allotting to each section, and the paper you could see, if you have analyzed the paper that way, you would feel that it has strictly followed that criteria only, and this makes the things quite, well, you can say comprehensive in terms of chapter wise. So I'll tell you what exactly is my reason of saying that. So if you have gone through the previous year paper, which is of 2017 maths board paper, you would have observed that there were few chapters from which no question was asked at all. Some notable mentions are real numbers, polynomials, pair of linear equation in two variables, triangles, and statistics. But this year, if you have analyzed the paper again quite well, if you were able to see the paper or observe the paper carefully, you would see that each and every chapter was given some weightage or some question was definitely asked from each chapter. So I have the breakup with me. Real numbers, the weightage in 2017 was of 0 marks, but this year it had 6 marks weightage. Then again polynomials की अगर हम बात करें तो 2017 में there was no question on polynomials, but इस बार 2018 में we had a question of 3 marks from polynomials. Then again from pair of linear equations, no question last year, but this year it was of 11 marks. Well, I am considering 11 because there was an extra question of 4 marks there as well in all choice. Then again quadratic equations, last year it was of 13 marks, but this year the weightage for the same was only 1 mark. Arithmetic progression last year 10 marks का आया था, but इस बार सिर्फ 7 marks का. Triangles last time 0 marks, but this time 15 marks. Coordinate geometry last year 11 marks, this year 9 marks. So yeah, this was you can say कि more or less quite close to last year's number. Then again introduction to trigonometry, last year we had no questions from this chapter, but this time we had again 11 marks dedicated from this chapter. Again I'm saying 11 because there was an extra 3 mark question from this chapter. Some applications of trigonometry की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, बट इस बार इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का. सर्कल्स में लास्ट ईयर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, बट इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का. Constructions last year or this year again there were same, so of 1 question of 4 marks. Areas related to circles 7 marks for last year, this year only 3 marks. Surface area and volume last year 13 marks, this year 12 marks. Statistics last year surprisingly no question, but this year 11 marks if you take in consideration the choice question. And probability last year it was of 8 marks, but this year it was just of 4 marks. So this basically rounds our paper pattern discussion. Now if I have to draw some analogies as compared to last year, then I would say that questions were comparatively on the difficult side this year. So even though the question paper was entirely from NCERT, yet there were few questions, or you could say there were some inclusions of few questions which were considerably difficult if you look at them or if you compare them with the inclusions of last year questions. Then again we have questions from all the chapters this year, which I've already mentioned, and there was more emphasis on trigonometry, triangles, statistics, and surface areas and volumes. So from trigonometry we had like 11 plus 4 15 marks. Triangles alone gave us like 7 marks, and there were like 8 marks, and then there were again all choice questions. Then we had surface areas and volumes 12 marks if you consider the choice one as well. And finally you can also consider pair of statistics and pair of linear equations in 2 variables as well. So let us now take a look at the question paper.
and let's discuss some things about the questions that appeared. So I have the question paper here with me. This particular one as the first question as given, triangle ABC is similar to triangle PQR. If AB by PQ is equal to 1 by 3, then we have to find the area of triangle ABC upon area triangle PQR. So basically we have to compare the ratio of the two triangles, which is ABC and PQR. Now if you remember the theorem, then the actual ratio would be the square of the given sides. Then that way you can say that if AB by PQ is equal to 1 by 3, which is equal to K, then AB will be equal to K and PQ will be equal to 3K. That way area of triangle ABC will be K square and area of triangle PQR will be 9K square. So the answer would be 1 by 9. So this was our first question. Our second question, cos square 67 degree minus sine square 23 degree. So we already know that cos is a complementary angle of sine. So if we are talking about cos theta, then cos of pi by 2 minus theta is sine theta. So here if you apply that property, you will finally obtain sine square 23 degree minus sine square 23 degree. That is, आप cos 67 degree को लिखेंगे cos pi by 2 minus 23 degree, which will be equal to sine 23 degree. So final answer would be 0. Now we have to find the distance of a point x comma y from the origin. The answer is very simple. It's square root of x square y square, because origin is 0, 0 and the point given to us is x comma y. Fourth one, if x is equal to 1 root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equal to 0, then we have to find the value of k. Well, we already have 1 root of this quadratic equation and we know कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट को उसमें पुट करें, यानी x की जगह उसे सब्स्टिट्यूट करें, तो फाइनल आंसर 0 के बराबर होता है. सो टेकिंग दैट थिंग इन कंसिडरेशन, आई वुड से कि x इक्वल टू 3 को आप इक्वेशन में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कीजिए. 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0. इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. Then what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? Now this one I can say it's a very good question. The reason is कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि smallest prime number और smallest composite number होता क्या है. So smallest prime number we all know that it's 2. In fact 2 is the only even prime number. I think you already know that. Also the smallest composite number is 4. Now if you feel that 1 is actually the smallest composite number, then let me correct you over here. 1 is actually a unique number. It is considered as neither a prime number nor a composite number. So if you have taken that thing clearly and if you have taken care of that thing clearly, you would finally obtain your HCF as 2, because HCF of 2 comma 4 is 2. Finally the last question, if in a AP if the common difference d is equal to minus 4 and the 7th term is 4, then we have to find the first term. So 7th term हमें दे रखी है, अगर हम formula wise ऐसे substitute करें, then a plus 6d is equal to 4. d की वैल्यू हमारे पास minus 4 है already. आप d की वैल्यू इसमें put करें और आपको finally आपका आंसर मिल जाएगा. So this means हमारा जो वैल्यू आएगा that would be equal to a minus 28 is equal to 4. That means a is equal to 32. Okay, sorry, a minus 24 is equal to 4. That means a is equal to 28. It's 6d. I took it 7d by mistake. My bad. Next question. An integer is chosen at random between 1 and 100. Find the probability that it is divisible by 8 or not divisible by 8. So इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये एक्चुअली इंटरलिंक्ड हैं. आपको भी पता है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ऐसे नंबर्स की जो डिविजिबल बाय 8 हो, देन 1 में से जब आप वो प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आपके सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा. सो सिंपली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 8. लोएस्ट नंबर इज 8, हाईएस्ट नंबर इज 96 and total I think there are 12 cases, so probability should be equal to 12 upon 100, which is 3 by 25.
which will make the second part as 22/25. Okay, cool. Next question. Two different dice are tossed together. Find the probability of getting a doublet. So doublet यानी कि दोनों dice के ऊपर same number आना. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6 are the 6 possible cases out of the 6 times 6, 36 total cases. So the answer would be 6 upon 36, which is 1/6. Now the second part is the probability of getting a sum 10 of the numbers on the two dice. यहाँ पे आपको वो सारे केसेस अलग करने पड़ेंगे जिसमें आपकी जो डाइस के ऊपर जो नंबर शो हो रहे हैं वो आपको सम 10 दे रहे हो. तो ऐसे 3 ही केसेस पॉसिबल हैं. इट्स 6,4, 4,6 and 5,5. So this basically will give you the answer as 3 upon 36, that is 1/12. So I have some specific requests. I would like you to be more clear on that. I would like you to so what I'll do is discuss the questions one by one, and if there is any specific doubt of yours in any question, we'll take that in detail. Okay, so the first question that I have got a request of is question number 26. So question number 26 अगर मैं देखूं, then let me just take that question out. Okay, my bad, I don't really have question number 26 with me. Let me just take a look at the things again. So yeah, now got it. Sorry for the delay. A motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 more hour to go 24 km upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पहले ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि हम जो हमारी स्पीड्स ले रहे हैं, जो स्पीड कंसिडर कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, और अपस्ट्रीम के केस में वो माइनस हो रही हो और डाउनस्ट्रीम के केस में प्लस हो रही हो. सो अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर, यानी कि उसकी स्पीड v अगर हम कंसिडर करें उसे, तो वो हो जाएगी 18 km/h. टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम. सो कंसिडर करते हैं कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x है. अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे दोनों ही डिस्टेंस कवर्ड और अपॉन टाइम की अगर आप बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल दिया है. तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो फर्स्ट पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर आप देखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी 24/18 - x. देन इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डाउन स्ट्रीम का टाइम, विच इज 24/18 + x. तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1. सो मेक श्योर कि आप इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो. आई रिपीट, इट शुड बी इक्वल टू time taken to go upstream minus time taken to go downstream is equal to 1 hour. So time taken to go upstream के लिए आप जो desired values हैं वो put कीजिए. That should be 24/18 plus 18 minus x, because speed जो है वो कम हो जाएगी, minus 24/18 plus x is equal to 1. आप जब इसे solve करेंगे तो आपको एक quadratic बनेगी. उस quadratic को solve करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा. Okay? Now the answer would actually come out to be 6 km/h if you do the calculation, and that way you can obtain, and that way you can confirm your final answer. Okay, if you take a look at the question which is in the choice, a train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km/h more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the total average speed? Cool. So आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें 2 टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं और इस बार हमें उनके टाइम दोनों का सम जो है वो निकालना पड़ेगा. द रीजन इज कि
यहाँ पे हमें जो दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, दैट इज द सम ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, विच इज 3 hours. So again, for the first duration, I would say that it would be equal to 63 upon x plus 72 upon x plus 6, और ये जो दोनों से टाइम इंटरवल आया है, दोनों का जो सम होगा that will be equal to 3. Now when you will solve this, again you are going to get a quadratic equation. Make sure that you are solving it correctly and you will get your answer. If I was given a choice कि मैं इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन सा सेलेक्ट करूंगा, then I would have chosen the first question, because अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट है. आपको वैल्यूज जो है उससे सिर्फ एक वैल्यू ऐड करनी है, एक वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है वेलोसिटी से, एंड फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, so there goes our 26th question. I hope most of you have got it correct. अगर किसी का सही नहीं भी हुआ है तो भी you don't have to worry about it. Now let's take a look at the next question. And for the next question we have a request from Nikhil Verma. The sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first term and the last term to the product of 2 middle terms is 7:15. Find the numbers. ओके निखिल, सो सबसे पहले आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिंस आपको सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी दिया है, तो इसलिए आपकी जो अब एपी होगी इसका कॉमन डिफरेंस आपको डी नहीं 2D कंसिडर करना है. सो लेट मी टेल यू व्हाई 2D, बिकॉज जब हम 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम निकालेंगे देन वी यूजुअली प्रेफर कि हमारी जो एक वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए और वो होती है डी. तो आप इसकी जो 4 टर्म्स हैं वो लेंगे a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Here you can observe that each term or each consecutive term has a difference of 2d with respect to the first. Okay, so जब आप इन चारों को ऐड करेंगे then you will get a minus 3d plus a minus d plus a plus 3d. So 3d and 3d will cancel, minus d and d will cancel. You will get 4a is equal to 32, यानी a is equal to 8. तो अब आपके पास में आपकी फर्स्ट टर्म आ गई है a is equal to 8. अब आप जो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स. बट उससे पहले मेक श्योर दैट योर 4 टर्म्स, बिकॉज ऑलरेडी a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है. तो अब जो आपकी टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 8 minus 3d, 8 minus d, 8 plus d and 8 plus 3d. So take the product of the first term and the last term, which will be equal to 8 minus 3d times 8 plus 3d. In both the cases the terms will be same. यही होगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म बन जाएगी और लास्ट टर्म जो है बन जाएगी दोनों एपीज में. इट माइट बी द अदर केस अराउंड एज वेल, अगर जो आपका डी है उसका वैल्यू कुछ और आता है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप दोनों वैल्यूज से दोनों तरह की एपीज जो है वो. ओके, सो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ निखिल वर्मा. आई होप निखिल आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. Cool. So let's now move to our question paper discussion again. Now I have a question, question 9. Find the which P 4, M divides the line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3. Hence find M. So सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि P 4, M जो है वो जो लाइन सेगमेंट है A और B को ज्वाइन करने के बाद में उसे किस रेशियो में डिवाइड करता है. उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको P का x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, यानी कि आपको सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n जो फॉर्मूला है वो लगाना है, और आपको वैल्यू लगानी है 2, 3 की. अब इसमें सिंस आपको रेशियो निकालना है तो फाइनल आंसर जो है वो आपका m/n फॉर्म में होगा. सिंस ऑलरेडी क्वेश्चन में एक टर्म m दे रखी है तो हम इसे λ/1 का रेशियो कंसिडर करेंगे. So consider the ratio to be λ/1. Find the value of λ. जब आपके पास लैम्बडा की वैल्यू आ जाए तब आप y कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन में, यानी y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला के इक्वेशन में वो लैम्बडा की वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा m की वैल्यू का. ओके, कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट √2 इज इरैशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरैशनल नंबर.
सो रूट 2 अगर इरेशनल है तो हमें ये प्रूव करना है कि 5 + 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम सबसे पहले ये कंसिडर करेंगे कि 5 + 3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, एंड देन वी विल ट्राई कि हमारे पास में जो भी बन रहा है प्रोसेस उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट करें। सो अगर आपको याद हो तो रियल नंबर्स के जो ये प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, एंड जस्ट ट्राई एंड डू इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, you could see that so basically I am just going through the paper and I could not actually find any difficult one. Even if you see the next question, which is 11, you have to find the values of x and y, and it is a rectangle. So इसका मतलब है opposite sides equal होंगी। x minus y is equal to 14, x plus y is equal to 30. So there goes your answer. So this was your 11th question. अगर आप 12th क्वेश्चन देखें तो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, यानी आपको ये एपी का एक क्वेश्चन दिया गया है। इनिशियल जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 3, 8th मल्टीपल जो होगा वो होगा 24। फॉर्मूला जो है उससे आप उसके सम मल्टीपल्स का सम निकाल सकते हैं। देन अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, it had to increase its speed, blah blah blah. We have to find the usual speed. So to find the usual speed, जो conditions आपको question में दे रखी है, just make sure that you are following them while making your equations, and ultimately you'll reach your result. So इस question में कुछ ज़्यादा difficult नहीं है, it's a very straightforward question, much like the question 26 that we discussed, rather the odd choice basically. So make sure you are doing it, and I hope कि आपका ये question सही हुआ। 14th, prove that the area of an equilateral triangle. So prove वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, बिकॉज उसमें आपको कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूव करना है। तो आई वुड हैव चोजन द नेक्स्ट द क्वेश्चन विच इज बिलो। सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा, यानी कि जो साइड्स हैं वो बेसिकली 1 रेशियो देंगी, एंड दिस मीन्स दैट आपकी जो तीनों साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, एंड हेंस बाय साइड 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 रूल द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, माय बैड, सॉरी। Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Again, it's a proving question. You have to make sure that you are following the rule of, well, a line which is drawn from the center to the tangent is perpendicular to it. Using this, you will be able to prove the two triangles congruent. And once the two triangles are congruent, you can say that the corresponding sides are also equal, and hence the lengths of tangents are equal. Okay? So I hope that there was no major doubt of yours till these 15 questions. In fact, अगर आप next questions भी देखें तो वो भी काफ़ी easy हैं। 16th में आपको surface area निकालना है। Just make sure कि जो भी आप surface area निकाल रहे हैं वो question के according है। Now, when I say question के according है, इसका मतलब है कि अगर आप इस 16th question को देखें तो a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. You have to find the total surface area of the article. So सबसे पहले आप निकालिए total surface area of cylinder और उसमें से माइनस कीजिए आप total surface area hemisphere का, in fact 2 hemispheres का, and that will give you the result. और में आपके पास में एक और चॉइस है, a heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. So since it's a heap of rice and it's in the form of cone, you can use the formula to calculate the volume, which is 1/3 pi r square h. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप diameter और height यानी radius और height की एकदम correct value जो है वो substitute कर रहे हो. How much canvas cloth is required to cover the heap? Actually the curve surface, and ultimately find out the median. Okay. Next one. If 4 tan theta is equal to 3, then we have to find out the value of 4 sin theta minus cos theta plus 1. Okay, cool. Here, the hint which is given to us is that कि 4 tan theta is equal to 3 है. So basically हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा पेपर मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम tan theta क्रिएट करें, और tan theta अपॉन cos theta. हमारे क्वेश्चन में हमारे पास में साइन और कॉस दोनों है, बट उसे टैन बनाने के लिए
हमें कॉस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आप कॉस कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा 4 tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू आप tan थीटा से निकाल सकते हैं बिकॉज tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta minus 1, which is 1 plus tan square theta is sec square theta, right? That way you will get the value of sec theta. You can put these values in the given in the formed equation or in the formed expression and you will get the result. Next question is again very simple. If tan 2a is equal to cot of a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, you have to find the value of a. Now अगेन यहाँ पे हम वही कॉम्प्लीमेंट्री रूल जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था कॉस और साइन के बीच में, वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो हमें tan 2a की जगह लिखना पड़ेगा cot of pi by 2 minus 2a, यानी cot of 90 डिग्री माइनस 2a। फाइनली हम ये करेंगे कि जो हमारे पास में वैल्यू है वो आज कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इक्वेशन सॉल्व कीजिए और a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 19th क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल से है बेसिकली। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो निकालना है। शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक स्क्वायर का, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली आप उसमें से एक सर्कल का एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर्कल का एरिया क्यों, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उन सभी पे एक क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट्स को आप जब कंबाइन करते हो तो आपको एक सर्कल मिलता है। दैट इज व्हाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, कूल। नेक्स्ट वन, 20th क्वेश्चन, इट्स अ चॉइस क्वेश्चन। आपकी जो व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन चूज दैट। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स based on the vertices given of the parallelogram, so that is again very easy. And again in the next one also you have to find the area of quadrilateral ABCD, so which is again easy because दोनों के लिए हमारे पास में coordinate geometry का सीधा formula है। Cool. Next one, 21st question अगर आप देखें, so find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of the two given numbers. अगर आप इसका LCM और HCF जो है वो निकालेंगे तो 404 और 96 अगर आप देखें तो 2 ऑलरेडी कॉमन है इसके अंदर, इसके बाद में एक 2 जो है वो और कॉमन आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो 4 है वो आपका HCF होगा और LCM के लिए आपको 404, 96 का फैक्टराइजेशन टेबल से, यानी कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से LCM निकालना पड़ेगा। दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 404 into 96 और 4 एंड व्हाटएवर द LCM इज, उन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। हेंस आपने प्रूव कर दिया कि HCF into LCM is equal to product of the two given numbers. Now 22nd question, find all zeros of the polynomial if 2 of its zeros are given. So अगर 2 of its zeros given है तो आप उन दोनों zeros को कंबाइन करके एक नया polynomial फॉर्म कर सकते हो और उसके बाद में आपको उससे इस polynomial को डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तब आपको आपके बचे हुए जो 2 polynomials हैं, वो 2 zeros है वो भी मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ओके, 22 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में माय वर्डिक्ट इज कि इन 22 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। सो इवन दो द पेपर वाज बिट डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, yet you can see the questions were very easy, so you can understand कि लास्ट ईयर वाले लोग कितने लकी होंगे, right? Now 23rd question, it's a construction question. Make sure that you are following the steps and I just hope कि आपने steps of construction भी इसके लिए लिखे हों। Okay, 24th question हमने already solve कर दिया है। 25th question, it's a proving question. You can prove any of these. I would have gone for the second one. अगर आप 26th क्वेश्चन की बात करें तो 26th क्वेश्चन अगेन हमने सॉल्व कर लिया है, which means that we are now not left with much questions, right? Cool. So let me just find out my next couple of questions and post that we will continue with the solving. So from what I have with me is
27, 28, 29. There are 3 questions left. Okay, so while I'm solving this, while I'm finding the questions which are with me, why don't you guys just tell me कि आपका question paper कैसा हुआ? I just hope कि जिस तरह से आपने practice की थी, आप अपना paper जो है वो उसी तरह से, right? So guys, don't get involved in such malpractices. They are punishable by law if caught. And and all the best for your next exam, for your maths read examination. We'll be doing a review and analysis of the paper. And now let's move on to the 27th question. So while 27th question is here, I'll also arrange my 29th question, and my 29th question is here only somewhere. So now 27th question, it's a question from Introduction to Trigonometry. तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसमें आपको जो 2 इक्वेशंस हैं वो फॉर्म करनी है, यानी कि 2 रिलेशंस फॉर्म करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर as observed from the top of 100 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree. Well, make sure that you are taking care of the angle of depression part. Angle of depression 30 degree or 45 degree है. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. So basically आपको यहाँ पे tan के terms में दोनों values find out करनी है, और उन दोनों के बीच का जो distance है उसको उस terms में आपके relation को बनाना है. जब आप बनाएंगे तो आपको आपका जो answer है वो बहुत easily मिल जाएगा. Okay? Then 28th question is from surface areas and volumes. The diameters of the lower and upper ends of bucket is in the form of frustum of a cone. If its height is 24 centimeter, find the area of the metal sheet used to make the bucket. So आपको यहाँ पे find करना है area of the metal sheet, और उसके लिए आप directly आपका formula जो है वो लगा सकते हैं. Why should we avoid the bucket made by ordinary plastic? Well, we all know that plastic is harmful for us, and that is why we should always avoid making a bucket which is made by ordinary plastic. So there are grades of plastics also available in the market. Make sure that you are going in an eco-friendly plastic, or I would say in a plastic which is well not harmful to your health. Okay? Cool. So there goes our 28th question. Now we are left with just one 29th question. And for our 29th question, you can see that we have a question from, okay, my bad, we have 30 questions total. 29th question is in ogive. So we have to convert the distribution above to a less than cumulative type frequency distribution and draw its ogive. If you see the first question, the mean of the following data is given, which is 18, and you have to find the value of f. So well, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए. एक पर्टिकुलर डेटा का अगर मुझे मीन जो है वो मुझे ऑलरेडी दे रखा हो और मुझे उसकी एक वैल्यू निकालनी हो, तो आई विल ऑलवेज गो बाय दैट क्वेश्चन, राइट. सो अगर आप इसमें क्या कहते हैं मिनिमम जो मिडिल वैल्यू है वो भी अगर कंसिडर करते हैं, तो भी आपको 12 टाइम्स 3 प्लस 14 टाइम्स 6 प्लस 16 टाइम्स 9 प्लस 24 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय आपको टोटल फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो लेना है, और दिस विल बी इक्वल टू 18. फाइनली जो आपकी इक्वेशन है वो f के टर्म्स में यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आएंगी, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f. फॉर द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव that sin a minus 2 sin cube a upon 2 cos cube a minus cos a is equal to tan a. Okay, so for this question, well, I would simply take cos a common, and जब आप cos a common लेंगे तब न्यूमरेटर से आप sin a common लीजिए, डिनोमिनेटर से आप cos a common लीजिए, sin a upon cos a आपको tan a दे देगा. अब आपका जो न्यूमरेटर का जो बचा हुआ पार्ट है that will be 1 minus 2 sin square a. Now 1 minus sin square a is cos square a. So cos square a plus sin square a will be, well, sorry, my bad, cos square a minus sin square a आपका न्यूमरेटर बन जाएगा. सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो 2 cos square a minus 1 आएगा. इसमें आप 1 minus cos square a को sin square a अगर कंसिडर करते हैं, then because of the minus sign it will be minus sin square a, and so न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये जो टर्म है यानी कि cos square a minus sin square a वो कैंसिल हो जाएगी. अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद sin a upon cos a, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये tan a होता है. ओके,
So this was about the question paper that came today. Well, I know it's quite discouraging for all of you that even after preparing, even after giving like all your hearts and well your dedication to this paper had to happen again. So yeah, tough luck guys. But yeah, just let me remind you that whenever the date comes out, whenever the exam will be happening, we'll again discuss the review and analysis of the paper with Toppr here again in the TopprLive session. So before signing off, just make sure that you guys are liking our Facebook page, subscribing to our YouTube channel and following us on Twitter. We are here for you. In case you have any doubt, you can write to us on support@toppr.com. We will we'll make sure that we reply you within 24 hours. And if not, then also we'll try and definitely reach you and resolve your query whatsoever. Cool. So just guys, make sure that you are subscribing to our YouTube channel. And I, Dixit Jain, I'm finally going to take leave of you. So bye bye guys, all the best, and don't get discouraged by it. These things happen. If your preparation is good, then you'll be able to do well in the next exam, in the retest as well. Bye bye.